Tomorrow, December 19, 2025, in the Lok Sabha, the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission or the Gramin Bill 2025, the VB G Ramji Bill, which replaces the Manrega scheme, has been passed amid strong protests from the opposition. A planned discussion on the severe air pollution crisis in Delhi NCR, originally slated for today after days of delay, was disrupted by the chaos surrounding the Rural Employment Bill. Congress MP Dipender Singh Hooda has repeatedly pushed for a comprehensive debate on air quality issues in the Parliament. Earlier, protests also highlighted the urgency of the pollution problem, underscoring public health concerns in the capital. Let's in fact take a look at what all the MPs had to say. But before we play out those bites for you from the members of the Parliament, I'm joined by my colleague Shikha Salaria, who's joining us live from Delhi to get you a ground update on what the situation is like. Shikha, when we're looking at this deteriorating air quality, it's worsening every day. It's bad for the people of Delhi, but the parliamentarians do not seem to have the time to discuss this. Shikha, we cannot hear you. If you could unmute yourself, please. किसी भी समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज पॉल्यूशन पर चर्चा की मांग इन्होंने, इनके नेता ने रखी थी, लेकिन जब उस पर चर्चा का समय आया, लोगों के सुझाव आते, अच्छी अच्छी बातें आती, सरकार की तरफ से जवाब आता, तो इसका कोई रास्ता निकलता। लेकिन ये रास्ता निकालना नहीं चाहते। ये सिर्फ सरकार पर आरोप, तथाकथित आरोप लगाना चाहते हैं। देखिए, कोई देर से कदम नहीं उठाया गया। लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है। जैसे जैसे पोल्यूशन का मामला बिगड़ा, तैसे तैसे ग्रेफ 4 लगाया, एनसीआर में आने वाली गाड़ियों पर रोक लगाई, स्कूल के बच्चों को, लाखों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पहली से 5वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन कक्षा कराई, इतना ट्रैफिक कम किया, पेट्रोल पंपों के ऊपर कह दिया कि इस लेवल तक की गाड़ियों को पेट्रोल पंप दिया जाएगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी डब्बे में भरकर बाहर फेंक दिया जाए, और ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि बाहर से लाकर छोड़ दी जाए। ये तो यहीं के पेड़ों से ऑक्सीजन मिलेगी। सफाई लगातार जारी है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन है। सर, आज आप लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया है, जबकि आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री जवाब देने जा रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि सारे जवाबों का जवाब जो है जी रामजी बिल के मिल जाएगा। बिल में एकदम साफ है, ये गरीब विरोधी बिल है, मजदूर विरोधी बिल है, किसान विरोधी बिल है। ये बिल में सारे प्रावधान हैं जो गरीबों के खिलाफ हैं। सारा पैसा कम किया जा रहा है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसमें कम हो जाएंगे, और केंद्र सरकार कोई जिम्मेदारी इसमें ले नहीं रही है, स्टेट के गवर्नमेंट्स पे जिम्मेदारी दे रही है। ये चाहती है कि मनरेगा में जो स्पेंडिंग था, जो एक्सपेंडिचर था, उसमें पूरी कटौती हो और वो पैसा पूंजीपतियों के हवाले किया जाए। एयर पॉल्यूशन को लेकर के भी आज चर्चा है। एयर पोल्यूशन की चर्चा तो हम लोग डे 1 से मांग कर रहे हैं। जहरीली हवा चल रही है, जहरीला मौसम हो गया है, जहरीली राजनीति भी चल रही है। सर, एक और सवाल है। सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। विपक्ष से कहना चाहती हूँ कि वो 2010 से या उससे पहले से भी आंकड़े उठा ले, तो ये AQI का लेवल क्या रहता था। AQI 2011-12 में भी 1000 तक रहा है, लेकिन ये दिल्ली के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकारों को काम करना चाहिए। आज जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार फरवरी 2025 में बनी है, तब से लेकर हम प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने समय रहते रोड्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए, जेट मशीन लेकर आए, MRS मशीन को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। पॉल्यूशन के स्तर को लेकर साइंटिफिक रीजंस पता चलने चाहिए, और पर्टिकुलर उन रीजंस को दूर करने का एक डिटेल स्टडी के बाद काम होना चाहिए। 400 पार तो इनका हो गया, भले सीट नहीं आई हो, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन, ये 400 के पार 500 तक चला गया इनका। ठीक है ना, मैंने आम लोगों के जीवन के साथ ये खेल रहे हैं। अगर ये अंधाधुंध माने जंगलों की कटाई करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे,
तो देश में तो ये होगा, यही क्या पूरे देश में होगा ऐसा। और ये माने तर्क देते हैं गाड़ियों को के प्रदूषण को, धुआं को देते हैं, ये हरियाणा पंजाब के किसानों को देते हैं कि ये लोग पराली जलाते हैं। तो ये बिल्कुल ही ये जंगलों की कटाई की वजह से, पहाड़ों के खनन से ये सारा प्रदूषण पैदा हो रहा है। All right, so we saw over there that those were the various parliamentarians, in fact, stating that they do need a discussion, but today was the scheduled day. There was a scheduled time frame for the discussion on air pollution. However, due to the ruckus that was created by the opposition over the Manrega, renaming of the Manrega scheme, this entire issue was downplayed. The House had to be adjourned and it will now reconvene tomorrow, and this issue was left undiscussed. So that's the importance that actually air pollution, the public health emergency holds for our parliamentarians, because they are failing to discuss this very important issue. The AQI is severely affected. It's in the hazardous to severe poor air quality, and people are suffering because of this. Now, the Delhi government has implemented a slew of measures in order to make sure that there is in fact some kind of relief on this, because they have stated that there should be 50% work from home, people should stay at home. They have also stated that vehicles which are coming from outside Delhi should not be below BS 6 levels, and there should also be no fuel for vehicles that do not have a pollution PUC certificate. So those are the strict measures that have been implemented by the Delhi government also. They have been implemented starting today. GRAP 4 and GRAP 3 measures are already in place, which restricts construction activities, which make sure that all the construction workers, in fact we heard that Delhi government also announced financial compensation for all those construction workers who were affected because of the halt in their work. So there are a lot of measures that the Delhi government is taking, in fact, to make sure that this issue has some short-term measures that are in place so that people can breathe cleaner air right now. But we can see that with winter setting in completely, there is dense fog, there is toxic smog, and people are forced to breathe bad air. And when we are looking at this, there was supposed to be a planned discussion on the severe air pollution crisis in the Delhi NCR region. It was slated for today after so many days of delay, but it was all disrupted because of the chaos surrounding the Rural Employment Bill. Remember that we also had Congress MPs and also MPs from the BJP coming to the fore and stating that this is obviously an important issue. This is a public health emergency and needs to be discussed by the parliament over here. Joining us live on the broadcast is my colleague Shikha Salaria. She is going to bring us the ground updates on what the situation is like. Shikha, we were just talking about how bad the situation is on the ground. It's difficult to see, it's difficult to breathe, and still the parliamentarians do not have the time to discuss this public health emergency. Yes, absolutely. The measures have been introduced. Some of the measures have been introduced in Delhi, but the reality is that Delhiites continue to grapple with extremely high levels of pollution, including PM 2.5 and PM10. And the situation is worsening day by day. It is that since we are at the peak of winters, we are also witnessing what scientists are telling us is that the pollution levels are especially high because of pollutants being trapped in the immediate atmosphere surrounding Delhi. And unfortunately, there were two MPs who were supposed to raise this
this very significant issue of public, public convenience and public health. But the parliament once again has failed to ensure that this in this very important, very significant debate comes through in the parliament, and the floor of the house takes up this debate. We were told that Priyanka Gandhi Vadra of Congress and Kanimozhi Karunanidhi of the DMK were supposed to raise this very pertinent issue in the parliament on the floor of the house, but clearly what we've been witnessing